So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as we all are aware that every Saturday at 8 p.m. we are having the Hindu analysis class with me. So actually every day 8 p.m. we are having the Hindu analysis. On Saturday I take the class, right? So let us begin. Let us begin with today's class. Today is 19th July and today we'll be discussing. Am I audible, visible? मेरी आवाज clear है? If yes, then please write yes. Okay, good evening, Adrija, Nirali. Welcome to the class. So let us begin. So first page पर there were two articles, both are very important. US adds TRF on terror list for Pahalgam terror strikes. This we will discuss. Then judge challenges Supreme Court probe ex-CGI's action in cash case. These two are very, very important and that is why we will be discussing it. So first of all, let's discuss this one. Okay, fine. So I hope you all are aware that we had witnessed a very unfortunate terror attack in Pahalgam. Please tell me the name of the river that passes through Pahalgam. Anyone? So we had seen on 22nd April a very unfortunate terror attack on where actually 26 people died. So the group that had claimed the responsibility is TRF, the Resistant Front. And I would suggest please read the Wikipedia page after the class is over. In fact, I have taught in the paid classes, but still those who have not read it, please read Wikipedia page of the Resistant Front because of course they can ask questions from here. Yes, Adija, right. Not Indus, Lidder River is there. Okay. And it is a tributary of which river? ये भी बता दो. Tributary of which river? Because आपने देखा होगा जब after the Pahalgam incident happened, a lot of journalists went there, and when they were doing interviews etc, there was a river that was flowing on the back. उसके पीछे एक river बह रही थी जहाँ पर जर्नलिस्ट लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो वही लिडर रिवर थी. ठीक है, वो ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इट्स लिडर इज अ स्मॉल रिवर बट इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ वेरी प्रोमिनेंट फेमस रिवर. कौन सी बताइए? झेलम, राइट अद्रिजा. हाँ, सो यहाँ से झेलम गुजरती. झेलम एक्चुअली श्रीनगर से जाती है ना, श्रीनगर यहाँ पे होगा, यहाँ से झेलम रिवर जाती है. सो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर. और झेलम का ओल्ड नेम एक और नेम है हयादास्पस. हयादास्पस, बैटल ऑफ हयादास्पस, पुरु वर्सेस अलेक्जेंडर, आपने सुना होगा. सर अभी नहीं, अभी तक तो नहीं गया. ठीक है. ओके, सो yes, so basically that is what you should know. तो हुआ ये कि the United States of America has declared it as FTO, foreign terrorist organization, and especially designated global terrorist. Okay, now उससे related आपको ये पता, तो Indian government has responded by saying that yes, this asserts our move, describing the move as a strong affirmation of India-US counter-terrorism operation. Okay, so this is a positive news. तो इसमें यह है कि एक कमिटी है UN Security Council 1267, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, 1267. Okay, this is a very famous sanction committee. Actually मैं बताता हूँ, UN Security Council का एक बहुत पुराना रेजोल्यूशन है 1999 का, UN Security Council Resolution 1267, and this was specifically to designate Osama bin Laden and others as the terrorist. Okay, Al Qaeda, Osama bin Laden, etc. Okay, so whenever we talk about that, whenever we talk about the 1267 sanction committee, we are the origin actually lies here in this United Nations Security Council resolution. Okay, so this is a committee of in America which actually designates terror groups or foreign terrorist organization. So this has actually the government of India, देखो ना, Indian government had sent a technical team with a comprehensive dossier. Dossier with a document होता है, यानी proof document के साथ, on the resistant front to New York for presentation. Actually, that is what you should be knowing. And TRF was declared as a terrorist organization under UAPA, Unlawful Activities and Prevention Act, in January 2023. That is what also you should be knowing. And it is actually considered as a part of LET, Lashkar-e-Taiba, founded in 2019 by Mohammad Abbas Sheikh. So please remember it. These are the terms that can be asked in the exam. Okay. Let's move on. Okay, let's move on to the next one. The next article on the first page was talking about judge challenges Supreme Court probe ex-CGI's action in cash case. अच्छा, इसमें तो आपने सुना होगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर
of what had happened, Mr. Yashwant Verma, somewhere around March or April, you know, he was actually the judge of Delhi High Court at that time. I think he was the second or third senior most. So he was just after Chief Justice. I think the second senior most judge. Okay. So from seniority ranking, he could have become a Chief Justice also of a High Court. Okay. So what happened was there were burnt notes. The allegation is the burnt notes were found inside his, not exactly his bangla, but actually जैसे ये premises है, तो ये मान लीजिए इनका बंगला है और ये कैंपस है, मतलब बाउंड्री वॉल है. ओके, तो बाहर में आई थिंक जनरेटर रूम टाइप स्टोर रूम होता है ना, वहां मिला था ये. ओके, दिस इज एग्जैक्टली बिकॉज आई नीड टू बी न्यूट्रल व्हाइल टेलिंग दिस. यस, ठीक है. आई एम नॉट पासिंग ए जजमेंट वेदर दिस नोट इज बिलोंग्स टू हिम और नॉट बिकॉज आई डू नॉट नो, बट वॉट एवर इज द एग्जैक्ट फैक्ट आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. उनके घर के बंगला में नहीं, बंगला के बाहर जो प्रेमाइसेस में स्टोर रूम टाइप समथिंग होता है, ये जनरेटर रूम होता है, उसमें पैसा मिला, उसमें आग लग गई थी. एक्चुअली द फायर हैपेंड and because of which he was not there in his bangla or house. He was in some other city. So when actually fire brigade was invited or called, so it was found that there were burnt notes. Okay, so ये आपको पता होना चाहिए, that was actually the case. अब now the thing is by default it will be considered कि आपके घर में ऐसा पैसा कहाँ से आया. So he'll have to prove it कि this is not money, or maybe someone would have put it or something like that. Okay. So I'm not here to pass a judgment whether this belongs to him or not. If this belongs to him, then of course it is very difficult to prove because the amount was cash was somewhere around 15 crore. So proving it that 15 crore belongs to him, and that too in a legal way, is very difficult, है ना? कि इतना पैसा कहाँ से आपके पास है, नोट में वो भी. So that is what. So later on, when hangama happened, when hue and cry happened, he was later on transferred back to Allahabad High Court. So originally he was from Allahabad High Court, and he was then sent to Delhi High Court, and the cash was found when he was in as a Delhi High Court judge. So he was sent back again. Okay, after this tamasha happened, or news were there in the news channels, etc. Now the thing is, although he is a sitting judge of High Court, no action has been taken currently. No FIR has been registered as far as my knowledge is concerned. But of course, the inquiry will be conducted, and he is not given any case. So he is getting all those salaries, etc., everything, but he is not hearing the matter because, of course, there's a grave allegation against him. Now, the thing is, he said that in-house inquiry process has been started, which is parallel and extra constitutional mechanism. See, what happened was, when the allegation happened, the matter went to the Chief Justice of Delhi High Court, and Chief Justice of Delhi High Court made some reports to the Chief Justice of India. So, Chief Justice of India at that time was Justice Sanjeev Khanna. So he made an in-house inquiry. In-house inquiry means the judges of the Chief Justice of India, along with a few Supreme Court judges, they have decided it. Okay, that's called as in-house inquiry. Now he has said that there is nothing like that. This is extra constitutional. There is no such provision. The Chief Justice cannot come up its own. And I was not allowed enough argument, or I was not allowed the space to represent myself. That is what he has said. So the residents 14-15 March ye baat hai. And he's saying that the CJI had at that time sent a report to the Prime Minister and the President after the Justice Verma refused to resign. First, the CJI said that please resign. The CJI actually decided, the Mr. Justice Verma decided not to resign, and that is why he recommended to Prime Ministers that okay, this is the report, and for us, I think it appears that perhaps he should be removed or something like that. Okay. So then when he went to the Supreme, then he has filed a petition. He said that removing of a judge is the exclusive power of the parliament and not of the judiciary. यानी मेरे खिलाफ मतलब सीजीआई साहब ने एक तरह से रिकमेंड कर दिया कि इनको रिमूव कर देना चाहिए. तो ये तो पार्लियामेंट का काम है रिमूव करना. 124 and 218 says. Okay, through the process of Judges Inquiry Act 1968. Okay, I will schedule a class on this topic again. Maybe इस week में तो नहीं, लेकिन next week में, because I think it is important. तो जब petition was filed, तो उसमें उनका नाम नहीं लिखा, बस it is written XXX, who is Allahabad High Court judge. तो जाहिर सी बात है खुद ही होंगे, नाम नहीं लिखा गया, but okay, it's very crystal clear. Of course, he is the same person, है ना. So he has said that the in-house inquiry has no legal sanction. It is not mentioned in Judges Inquiry Act and Article 124 and 218.
and he said that whatever the in-house inquiry has been conducted, it should be declared as unconstitutional. So he has filed a petition. Okay, that is what the case is. ठीक है, तो let us see what will happen further. तो इस पर रिमूवल प्रोसेस पर ना मैं सोच रहा हूँ आई विल शेड्यूल अ क्लास नेक्स्ट वीक, बिकॉज इस वीक में जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है इसमें तो मैंने शेड्यूल कर दिए क्लासेस, नेक्स्ट वीक में आई विल ट्राई. नाउ एक और फर्स्ट पेज में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थी, यूरोपियन यूनियन इंपोजेस सैंक्शंस ऑन रिफाइनरी इन गुजरात फॉर रशिया एनर्जी लिंक्स. नाउ सैंक्शन मतलब एक तरह का इकोनॉमिक बायकॉट हो गया ना. एंड व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? ओके, पहले आपको ये पता होगा, देखो दिस इज द ग्रुपिंग 27 मेंबर ग्रुपिंग इज कॉल्ड एज यूरोपियन यूनियन, है ना, यूरोपियन कंट्रीज का. हाँ, कॉलेजियम पे मैंने बनाया वीडियो, बट एक और मैं अच्छे न्यू वीडियो बना दूंगा कृषि सचदेवा, व्हिच इज रिलेटेड विद स्पेसिफिकली बेटा रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज. ठीक है, खैर तो इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट इट. तो देखो हुआ ये था, पहले फ्यू डेज बैक नाटो चीफ मार्क रूटे हैज सेड that India, Brazil and China should stop doing business with Russia, otherwise we will put sanction. मतलब आप रशिया से ऑयल खरीदना, you should stop buying oil and etc. Otherwise we will put sanction. Sanction means we will do economic boycott. We will not do trade etc. with India, China and Brazil. Okay. तो इसमें हुआ ये, अब NATO आपको पता होगा, you can watch this video. We have discussed about NATO. We have discussed about European Union also. You can watch that class. ओके तो अब इसमें है क्या चीज, तो मैं बता ये रहा था कि अब पहले तो नाटो ने डराया धमकाया एक तरह से, है ना, फिर यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि वी आर पुटिंग अ बैन. व्हाई? बिकॉज जो ये है ना, जो कंपनी है नायारा एनर्जी लिमिटेड, ओके, दिस हैज आई थिंक सम 51% के आसपास रशिया का शेयर है इसमें. लेट मी चेक इट, इट मस्ट बी रिटन समवेयर. यस, सैंक्शन गुजरात बेस्ड रिफाइनरी नायारा एनर्जी लिमिटेड, है ना, टारगेटिंग इसका ना जो है ना समथिंग आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट सम, हाँ 49.13%, राइट, हाँ ये देखिए, रशिया की एक कंपनी है रोजनेफ्ट, उसका 49.13% शेयर है इस कंपनी में. ओके, सो इट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट हाफ शेयर इज देयर, है ना, इन दिस कंपनी. So when European Union has put sanctions, so European Union has said that the oil that is being refined from here we will not buy. Okay, the announcement comes just as US Congress had debated on putting sanctions on purchases of Russian oil, crude oil with India, China and Brazil. Okay, तो यहाँ भी देख सकते हो, साफ यहाँ भी लिखा हुआ है कि ना, it will cause, the move would severely hit India's fuel export to Europe given the significant share of Russian crude oil in India's oil import. Okay, और जो नयारा एनर्जी है उसमें रशिया की कंपनी है रोजनेफ्ट, उसका 49.13% शेयर है. Okay, so Russia's company is there, Rosneft, who has 49.13% share in Nayara Energy. Okay, मतलब क्या हुआ, तो एक्चुअली हो ये रहा था कि we were buying crude oil from Russia, crude oil, and here actually we were doing the refinery and then we were selling to Europe also. ठीक है, ये चल रहा था, पहले से ही चल रहा था. Okay, and even Europe is also buying. So then now Europe has said, no, I will not buy because Russia is not stopping war. Okay, is it clear? ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज कही गई, देखो अगर आप पढ़ोगे, when you read it, it's somewhere written about Nord Stream 1 and Nord Stream 2 का ये बैन की बात हो रही है. Now, this is actually the gas pipeline from Russia to Germany. There are two pipelines, and Nord Stream 1 and 2 also. ठीक है, so this is also being talked about कि इसमें से भी there'll be restrictions will be made. Okay, ये हो गया, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है. So that is what you should know. So of course Nord Stream can also be asked in the exam. Okay, but in India ने कहा था कि it is a double standards because yes, European Union is also buying Russian oil directly or indirectly. खाली हम ही को क्या बोल रहे हो? Okay, 500% duties will be imposed. That is what the US Congress bill talked about. That if any country does a trade deal or oil deal with Russia, we will do 500% duties, import duty वगैरह लगा देंगे ना on countries buying Russian oil. So of course, वही, the question is then how the European will solve their energy problem, ठीक है, or their energy crisis etc. तो ये भी एक मसला है ना. So India has cautioned that it is a double standard because of course, है ना, Russian Sanction Act जो है ना, this is the law talks about it, है ना, introduced by close ally of Republican Lindsey Graham. Okay,
So ये जो senator है, senator means the member of Senate, and he had introduced this law, Russian Sanction Act, talking about tariffs on those who are doing oil deal with Russia. Okay, that is what you should know. Our NATO ki Secretary General he had actually threatened that we will impose sanctions, etc. Okay. Sanctions Act, Russia Act of 2025 है ना, 500% तक ड्यूटी लगा सकते हैं इसमें. These are the things being talked about. Okay. How will Europe solve this energy needs? That is what I was thinking कि क्या करेंगे. Okay. So उससे क्या होगा, एनर्जी प्राइस बढ़ जाएगा ना. That can also happen. Okay. Let's move on. एक और फर्स्ट पेज में आर्टिकल थी, छत्तीसगढ़ लेकर स्कैम. आई मीन देयर इज कोर्ट में लिखा बिकॉज इट्स एन एलिगेशन. So ED arrests former CM son Chaitanya Baghel. So Mr. Bhupesh Baghel is the former chief minister of Chhattisgarh, and on his birthday, his son was arrested. So Chaitanya Baghel, because there is an allegation against him of corruption, etc. Okay, Enforcement Directorate. I hope you all are aware. So it actually has 3 powers under 3 laws: Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act, Fugitive Economic Offenders Act. Rahul Naveen, Mr. Rahul Naveen is IRS, the director. Okay. Only BRICS countries, yes. Because actually BRICS is considered as a challenge to hegemony. ये last year CLAT में question आया था, CLAT 2025 का. And one of the answer was BRICS is actually a challenge to US hegemony. This was the answer to one of the question, है ना. तो US के पावर को, है ना, मैं एक तरह से बता रहा हूँ, मतलब इंडिया, चाइना और ब्राजील को तो थ्रेटन किया ना, साउथ अफ्रीका नहीं है, बट हाँ ओरिजिनल जो ब्रिक थी वो ब्रिक ही थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, यही था ना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट. सो रशिया इज डूइंग डील विद दिस एंड दिस. सो इन तीनों को थ्रेटन किया गया, है ना. एंड इफ यू हैव रेड क्लैट 2025 क्वेश्चन, दिस वाज वन ऑफ द आंसर कि ब्रिक वाज ओरिजिनली, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जिम ओनील, दैट ब्रिक विल इन फ्यूचर चैलेंज यूएस हेजेमनी और वेस्ट हेजेमनी, है ना. So that is what also you should know. Now, एक और निमेशा प्रिया केस, इस पर I have scheduled a class on Monday because I think this is also very important. So इसमें Yemen civil war का भी angle है थोड़ा सा. So we will also discuss that, and I think it's important because people were asking questions. Let's move on to editorial. Indian inequality and the World Bank's claim. So basically, there's an article recently. I hope you all are aware, where there was the PIB had said that India, as far as inequality or equality is concerned, India is the 4th most equal country. Then there was some criticism that this is not correct. So there were debates. And I had told you that we are not going in the debate. I had discussed the class also, where I had discussed about the important facts. Yes, Krishi Sardeva, you're right. 3 country पे इसलिए लगा रहे because they are buying Russian oil. Yes, you're right. So we are talking about this Indian inequality. Please tell me the name of the coefficient which is used to measure the inequality, and what is the name of the curve which is used to measure that coefficient. इस पर मैंने एक separate class लिया है, Gini coefficient and Lorentz curve. Very good, Krishi Sardeva. Great. So आप this is our YouTube channel. Please subscribe to it. Go to the live section, scroll down. यहाँ पे आपको मिलेगा Gini coefficient and Lorentz curve. This class is all about the same inequality पर जो concept आया था अभी. Okay. Now I have one question. Yes, Aditya, right? Please tell me. So Gini coefficient is measured from 0 to 1. So please tell me, if Gini is 0, is it perfect equality or perfect inequality? Big Cat Alliance, someone is asking. Okay, अगर मौका मिलेगा, so I will try to schedule some class for that somewhere. Zero is perfect equality or perfect inequality? If you watch my class, you will realize that there was a PIB report that talked about Lorentz curve and Gini coefficient. तो मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था, वो न्यूज में था, ठीक है. Yes. So that is what it's talking about. The author is talking about. Again, वो debate में जा रहे हैं कि whether that report was correct or not. उसमें debate है. Some people say कि नहीं वो सही है, some say नहीं सही है. So debate will not be asked in
कि नहीं रिप्रेजेंट किया गया, सही था, ये गलत था. So this is what is being talked about, but you should know about Gini coefficient, the concept, and Lorentz curve. Okay, am I audible, visible? Is everything fine? I don't know what happened suddenly. Is everything fine now? Okay. Fine. चलो ठीक है. Something suddenly happened. Okay, so we're talking about the same, है ना? वही inequality की बात कर रहे थे. So we were saying that if the Gini coefficient is 0 to 1 ऐसे लिया जाता है ना? Either 0 to 1 Gini is calculated, और या 100 से मल्टीप्लाई करके 0 to 100. So 25.5 means 0 to 1 में अगर आप देखोगे so 0.255 है ना? So the lesser the Gini coefficient is, the better it is, right? And this is derived from the Lorentz curve, which we have already done in that class. ठीक है? खैर है ना? So these are the things being talked about. अब इस डिबेट पे नहीं जाना है. They are talking about World Inequality Lab. वो उस क्लास में मैंने बताया था. The mainstream media commentators use the income share of top 1% as estimated World Inequality Lab. So this also I had discussed in this class. ये सब मैंने यहाँ discuss करा है. So I'm not repeating it again. Please watch this class. And it was very much in the news. That is why I'm telling you to watch. Okay, खैर. So let's move on further. है ना? एक और साइड पे आर्टिकल थी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. ये बजट में भी इट वाज टॉक्ड अबाउट इन द बजट आल्सो. आई होप यू हैव वॉच्ड माय बजट क्लास. तो इसमें ही बात हुआ जा रहा है स्कीम टू बी अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट. दिस वाज प्रपोज्ड इवन इन द बजट. It talks about implementation by convergence of 36 existing scheme across 11 departments. Okay, and he's talking about quoting Mr. Shivraj Singh Chauhan, who is the Agriculture Minister of India.
Sunny respect BRICS, the sanction of Russian oil is important. Yes, Riva, that is important, right? हाँ. तो इसमें है क्या चीज, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना. तो एक्चुअली क्या है कि दे विल बी फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन 100 लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स. लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी कहां होता है? ओके, दीज आर द प्लेसेस वेयर देयर इज पुअर सॉइल, फर्टाइल सॉइल की फर्टिलिटी पुअर है वहां, और जहां पर रेनफॉल कम होता है, राइट? लाइक आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड द रीजन्स लाइक प्रोडक्टिविटी, पुअर प्रोडक्टिविटी, विदर्भ इन महाराष्ट्र, रायलसीमा रीजन, मराठवाड़ रीजन, मराठवाड़ जो इंडिया के एकदम बीच वाला हिस्सा जो है ना, उसमें खास किया दोज वेयर एक्चुअली एरिड और सेमी एरिड रीजन्स. तो स्पेसिफिकली 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया है जहां पर प्रोडक्टिविटी कम है, बिकॉज लो प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड विद पॉवर्टी, हंगर, है ना? अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लेस, yes, similar to aspirational district program, right? So if agriculture productivity is less, what will happen? There will be more poverty. The farmers will not be able to pay the debt. They will be in crisis, hunger, etc. बहुत सारी चीज होगी, आपको पता है, कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो. So इसमें है कि स्पेसिफिकली टारगेटिंग द 100 लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट, समथिंग सिमिलर टू द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग. उसी बेसिस पर ये बनाया गया है, ठीक है? सो 36 एग्जिस्टिंग स्कीम, कोई नया स्कीम नहीं लॉन्च किया जाएगा. 36 को एक साथ क्लैप करके स्पेसिफिकली इट विल बी टारगेटेड इन दोस 100 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना? To push small and marginal farmers. India has almost around 86% small and marginal farmers who have less than 5 hectare of land. Okay, less than 5 hectare land को small and marginal इसमें आते हैं. So इनकी profitability बढ़ाना है. That is the idea behind this scheme. Okay, and 1.7 crore farmers will get benefit from this scheme. तो ये बात हो, एक तो ये हो गया. दूसरा स्कीम होता है पीएम किसान. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर. व्हाट इज पीएम किसान? PM Kisan scheme. This is to provide input cost. देखो होता क्या है, for example, if a farmer is very poor and that farmer needs input like let's say fertilizer, he or she needs to buy, है ना? Then seed खरीदना होगा, fertilizer खरीदना होगा, etc. कहां से लाएगा पैसा? The farmer is very poor. He was not able to save any money from the last year's produce. पिछले साल जो प्रोड्यूस हुआ सब घर में खर्चा हो गया, खाना पीना में, बच्चे की पढ़ाई में, कुछ नहीं बचा. सो फॉर दैट एक्चुअली पीएम किसान योजना इज टू प्रोवाइड 6,000 रुपी इन 3 इंस्टॉलमेंट, रुपीज 2,000 एंड रुपीज 2,000. साल में 2,000 करके किसान को 6,000 रुपये मिलेगा. सो हर 4 मंथ्स पर, ठीक है, इन 3 इंस्टॉलमेंट. वाई? टू बाई इनपुट कॉस्ट को फाइट करने के लिए, मतलब इनपुट कॉस्ट को कवर करने के लिए. इनपुट कॉस्ट इंक्लूड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, है ना? ट्रैक्टर वगैरह कभी शुरू में खेती वगैरह करने के लिए अगर बड़ा लेवल का तो ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, बट इनपुट कॉस्ट में देखो फर्टिलाइजर और सीड तो एकदम चाहिए. यस, अब उसमें होता ये कि आप बोलोगे सर तो स्मॉल है, बट यस फर्टिलाइजर है 200, 400, 500 का फर्टिलाइजर होगा, 50, 100. अच्छा जो सीड्स आता है HYV सीड्स आर स्लाइटली कॉस्टली, तो उनके लिए 200, 400, 500 इज अ बिग अमाउंट. Okay, so for farmers this is a very big amount, like 2,000 is a great thing for them. ठीक है. दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, which talks about crop insurance. If God forbid anything happens, मान लो for example flood आ गया या drought हो गया, something like that, they get insurance covered or something like that. ठीक है. So इसकी बात हो रही है ना? तो वही जो ये वाला स्कीम है धन धान योजना, इट इज सिमिलर टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग, है ना? सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है नीति आयोग का, उसमें भी ये था कि स्पेसिफिक टारगेटेड, आई थिंक 110 और सम डिस्ट्रिक्ट्स वर टारगेटेड टू इंक्रीज पॉवर्टी, टू डिक्रीज पॉवर्टी. ओके, है ना? सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. पीएम किसान पढ़ लीजिएगा. हर साल 6,000 रुपया दिया जाता है फार्मर्स को इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2,000, 2,000, 2,000, है ना? हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है. हाँ, खैर, सो वी आर डन विद दिस. इसमें कुछ और नहीं. खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप आपको पता होगा, आई होप. Okay. Now the next article is the mental health of pilot is the elephant in the room. Now I hope you are aware. तो actually क्या हुआ था, अभी रिपोर्ट आई एयर इंडिया क्रैश की, है ना? आपने देखा होगा. दिस रिपोर्ट केम, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो केम अप विद द रिपोर्ट. नाउ इसमें हुआ क्या कि इस रिपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई थी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में वन पायलट इज सेइंग दैट व्हाई डिड यू कट ऑफ, द अदर पायलट सेड ही डिड नॉट सो. तो एक तो है कि व्हाई डिड ही कट ऑफ, मतलब मोस्ट लाइकली इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि इंजन कट ऑफ स्विच की बात हो रही है. एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा
कि तुमने इंजन क्यों बंद कर दिया, मतलब इंजन में जो फ्यूल सप्लाई है वो भी दोनों, और ऐसा कहा जा रहा है कि 1 सेकंड के गैप पे हुआ, तो दूसरे ने कहा कि हमने नहीं किया. दैट इज द थिंग. अब इससे लोग ये इंटरप्रेट करें, पीपल आर इंटरप्रेटिंग स्पेशली द वेस्ट मीडिया दैट that pilot was not healthy or something like that, or they were trying to like kill themselves or something like that. इतना जल्दी देखो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस, है ना. एयर इंडिया क्रैश शोज पायलट कंफ्यूजन ओवर मींस it appears that they are blaming the pilot directly, that perhaps pilot की ही गलती थी, मशीन में फॉल्ट नहीं था. मे बी गॉड नोज बेटर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि पायलट की गलती थी कि नहीं. अब देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. देयर इज अ कांसेप्ट वी लर्न, व्हाट वी कॉल इट एज Audi alterum partum. What is the meaning of this? है ना, ऐसे ही होते हैं, स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे होगा, आप देख लेना, है ना. दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि आप लीगल फील्ड के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए. इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हिच सेज Audi alterum partum. क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, बताइए. Everyone has a right to be heard. Yes, right. हाँ, right. Listen to the other side before passing a judgment. है ना. Yes, नीराज, right, good. हाँ. यानी इसीलिए whenever it is, इसीलिए मीडिया ट्रायल को गलत क्यों समझाता है, बिकॉज मीडिया एक्चुअली क्या होता है, एक साइड का जजमेंट पास कर देती है, बट यू आर नॉट हियरिंग. बट इन द कोर्ट जब अदालत होती है तो दोनों साइड की हियरिंग होती है. इवन अ ड्रेडेड क्रिमिनल इज आल्सो गिवन लॉयर बिकॉज ऑफ दिस रीजन. आप दूसरे की बात सुनिए फैसला सुनाने से पहले. बट हियर द प्रॉब्लम इज, if you are accusing a pilot, the pilot is not here. Here the principle of natural justice cannot stand because the pilot is not alive. ठीक है, बोला था डेड मैन डो नॉट स्पीक. तो चूंकि अगर मान लीजिए सब लोग बोले पायलट की गलती, तो भाई वो जिंदा तो नहीं है कि वो आके बोले कि नहीं मेरी गलती नहीं थी. Whatever you can say is actually black box में जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसी से पता चलेगा, और दैट इज नॉट 100% गारंटी कि उससे क्लियर कट पता चल रहा है. तो नाउ पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट, मेनी पीपल हैड सेड कि अच्छा पायलट का मेंटल हेल्थ नहीं था, बहुत प्रेशर में था, एंड दैट्स व्हाई देयर हैव बीन पास्ट इंसिडेंट आल्सो वेयर द पायलट ट्राइड टू किल इटसेल्फ. हो सकता है पास्ट में ऐसा इंसिडेंट हो, बट वी डू नॉट श्योरली से दैट इन दिस केस आल्सो दैट वाज द केस. तो फॉरन आई थिंक इट्स नॉट एडवाइजेबल टू जंप टू द कंक्लूजन. सेकंड थिंग, आई एम आल्सो नॉट वेरी Is it clear now? I don't know what is happening today. Sometimes the tech issue creates a lot of problem. Is it visible? Everything is fine? ठीक है, okay, so we're talking about that. ठीक है,
So that the author is talking about this article, saying that there were issues like maybe pilot's health was not fine, etc., or something like that. इसमें मतलब इतना डिटेल नहीं जाना, but just have an idea about it. अब साइड में एक आर्टिकल थी, कर्नाटक गवर्नमेंट. I hope you all are aware that recently the IPL match happened, and for the first time in the last 18 years, Royal Challengers Bangalore won by defeating Kings 11 Punjab, है ना, Kings 11 Punjab. Now, and it is being the captain is Mr. Virat Kohli. But what happened just after the match, during the celebration time, unfortunate incident of stampede happened where people died also. Now, this report has came. So, this report mein editors are saying that the Karnataka government also should share the blame. Means that is what is being talked about. That is what you should be doing about. ठीक है, so Chena Swami Stadium भी unfortunate incident हुआ था 4 June को. And that killed 11 people and left 71 injured. That is what. So there's a name of the commission, John Michael D. Kunha Commission. ये हो सकता है पूछ ले commission का नाम. It came down severely on RCB management and the police. So ये committee का नाम आपको पता होना चाहिए. ठीक है. And blame must be given to all stakeholders who did not think of the consequences, etc. तो सब पर blame डालना चाहिए equally, etc. That is what the author is saying. So you should know the fact. That is more than enough. फिर एक और आर्टिकल है ग्राउंड जीरो ये पे था कि फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स. ये एक्चुअली हुआ ये था कि एक ब्रिज है, मुजपुर गंभीरा ब्रिज ऑन माही रिवर. ओके, यहाँ पे गुजरात में माही रिवर है, समवेयर हियर माही रिवर इज देयर. And in that Mahi river, this unfortunate incident happened where the bridge, quite old bridge it was, and it got collapsed. इसमें एक चीज आपको पता होना चाहिए, माही रिवर जो है ना, it is the only river in the world that cuts Tropic of Cancer twice. आप जानते हो, यहाँ से Tropic of Cancer गुजरता है इंडिया के 8 स्टेट से, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना. अब माही रिवर कट्स इट ट्वाइस. ठीक है. अच्छा, बता सकते हैं कौन सी विच रिवर कट्स इक्वेटर ट्वाइस? ये बता सकते हो? एनीवन? क्लास ऑन ऑपरेशन सिंदूर. यस रिवा, आई हैव टेकन 2 क्लासेस. आप लाइव सेक्शन में जाके स्क्रॉल डाउन करना, एक क्लास है INS विक्रांत लिखा होगा यूट्यूब पर. Go to our live section of our YouTube channel. One thumbnail was talking about INS विक्रांत. एक और होगा, उसमें लिखा होगा S-400 Rafale Defense System, thumbnail पे लिखा होगा. These two are related with Operation Sindoor. ठीक है. हाँ, Congo River. Yes, Adija, right. Equator cuts twice Congo River in Democratic Republic of Congo. ठीक है. Yes. Motion to remove judge not related to government, says Minister, Mr. Union Minister of Law Justice, Mr. Arjun Ram Meghwal had said this. कि MPs कर दें तो इनमें मिनिस्टर का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है. ठीक है, that is what he has said. एक और न्यूज था, गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स फेक वेरीफाइड एक्स अकाउंट इन हाई कोर्ट. तो एक्चुअली क्या है, मिस्टर थोसार मेहता, हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, he made a fake account just to show it that it can be verified by the X. देखो होता क्या, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ट्विटर का अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे होता है. आप कैसे पहचानोगे कि ये अकाउंट ओरिजिनल है कि फेक बनाया हुआ है? हाउ विल यू वेरीफाइड? तो इससे होता है ना, वेरिफिकेशन पैज, है ना. और भी चीजें, जैसे बहुत बड़े लेवल पर फॉलोअर्स होंगे, इतना ज्यादा फॉलोअर्स, है ना, तो ओरिजिनल होगा चांसेस ज्यादा, है ना. सो वेरिफिकेशन बैज X देती, जिसको पहले ट्विटर कहते थे. Now the thing is, it can be given to a fake account also. यही वो बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक अकाउंट बनाया, he made an account सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटका के नाम पे, जबकि there is nothing like सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटका, and that was verified by X, which is of course a mistake. Ideally ऐसा नहीं होना चाहिए. Now this was done why? Because X ने allegation लगाया on government that government is misusing Section 79 of Information Technology Act and curbing censorship and doing censorship. And it is suppressing people. So Sahyog portal is there to regulate the content. But according to X, they are saying that they are actually misusing Section 79 and Sahyog portal to do censorship. And they have called it as censorship portal. यानी आवाज दबाने की कोशिश है, ये X का कहना है. So what happened was few days back, I'm sure you must have heard that Reuters X account was blocked. So the X had said, no, I have received the order from IT ministry. That is why I have done. Okay, that was the case. So these are the allegations and counter allegations. So government के जो solicitor general, government lawyer, he said, look, you can see that there are flaws in the X also. I have made a fake account and they have verified it.
तो लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया। ये सहयोग पोर्टल आप देख सकते हो, प्लीज रीड अबाउट सहयोग पोर्टल। So this facilitates removal or disabling access to any information being committed as an unlawful act. Okay. तो मतलब ये कि अगर कोई इलीगल या कुछ गलत चीज दिखा रहे तो आप इसमें कंप्लेन कर सकते हो सहयोग पोर्टल के थ्रू, और आप रेगुलेट किया जा सकता है कंटेंट। So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.